Hi guys, welcome to Couple of Critics. I am Radhika. And I am Anurag, the podcast where two couples roast, rave, and occasionally regret what we watched. And of course, इस podcast में मूवीज, शोज सब कुछ रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वीकेंड पे आपने कौन सी मूवी या शो को डेफिनेटली देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए. एग्जैक्टली. So, snacks ready, remote in hand. Our relationship may not survive, but at least pop culture will. देखते हैं. So, what did we watch? What are we reviewing today, Anurag? So we watched this psychological drama thriller horror कह लीजिए, but the movie is called The Woman in the Yard. And by the way, it's a PG-13 movie. Oh, is it? Yes, so it's not an adult movie, right? So it's rated PG-13. The Woman in the Yard. बताइए कैसे शुरू करें? If I have to tell you in one word, loved it. Oh, is it? I loved it. बोरिंग नहीं लगी थोड़ी सी? नहीं, I mean, I really enjoy psychological thriller, horror kind of a substance, and this had it all. मतलब क्या crazy psychological thriller था. It started off at A and ended at Z. We didn't even realize how it went from one point to another. नहीं, ये बहुत अच्छी समरी आपने एक्चुअली दी है कि इट स्टार्टेड विद ए एंड एंडेड विद जेड. आई थिंक एक्चुअली में ये हुई है और हम लोग एक्चुअली स्पॉयलर्स नहीं देना चाहते हैं इस मूवी में, तो हम कोशिश करेंगे कि विल कीप इट स्पॉइलर फ्री. हाँ, एब्सोल्युटली. बिल्कुल कोशिश तभी करेंगे. मजा आएगा. लेकिन एक्चुअली में मजा नहीं भी आएगा, पता है, क्योंकि जो एक्चुअली में लास्ट में होता है ना, वो पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट दैट इज द फन पार्ट ऑफ दिस मूवी. तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक प्रेमिस दे देता हूँ कि ट्रेलर में आप लोग अगर देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको. तो बेसिकली एक फैमिली दिखाई है, हस्बैंड की डेथ हो गई है एंड द मदर इज ग्रीविंग एंड शी हैज अ 14-year-old kid and a young girl of maybe 6-8 years girl and 14-year-old guy. तो they are living out of a farm. Yes, and farmhouse है उनका. And suddenly they see a woman in the yard. In the broad daylight. भूत दिन में भी आते हैं, just by the way. अगर वो भूत है तो sorry, no spoilers. दे दिया स्पॉइलर, दे दिया. दर्द हो रहा है यहाँ पे. लेकिन So, हाँ, बिल्कुल धूप थी अच्छी खासी. Exactly. And now the woman is there. She's sitting, just silently sitting. Nothing's happening. And an hour or two passes and they see the woman moving. Now she's coming towards the house. She's changing her position. इसके आगे मैं नहीं बता सकती, नहीं तो बहुत ज़्यादा spoilers हो जाएंगे. नहीं, but actually ट्रेलर में भी यही दिखाते हैं कि तो वो बैठी हुई है and as the day passes by, right, जैसे जैसे शाम होते रहती है, the position of the woman starts moving towards the house. House, yes. And तो इसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है and the whole idea of the movie is कि भाई चल क्या रहा है, who is this woman in the yard? Exactly. Like the They're movie's trying to title. figure out कि क्या हो रहा है. Yes. So all the three actors in the movie are trying to figure out कि भाई चल क्या रहा है, who is this woman and why is she automatically coming closer to the house? Exactly. So that is the crazy part. Yeah. Right? तो initial thoughts क्या थे आपके जब मूवी obviously मतलब अब भी just हमने देखी है, fresh है बिल्कुल on top of our mind, right? And 12 बज चुके हैं रात के, 12:30 होने वाले हैं and we are recording this after watching this movie. तो tell me what was like your initial thought when the movie was going on, not like towards the end but like while it was going, the initial 30 minutes or so. तो I तो felt कि initial 30 minutes में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. They were setting the premise. मुझे पर एक चीज़ during those 30 minutes लग रही थी कि हो क्या रहा है. मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है. मतलब that lady is moving, people are moving inside the house, they're fighting, weird चीजें हो रही थी, बहुत weird चीजें जो बहुत ही कॉमन है साइकोलॉजिकल मूवीज में. ऐसी चीजें जो हमें, जिसके बारे में हमें 3 बार सोचना पड़ा, शिट ये क्या हुआ, what just happened. ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जहाँ मुझे लगा कि ओ शिट what did just happen, and हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे
कि यार तुम्हें समझ आया क्या हो रहा है मूवी में. और हम लोग इनफैक्ट मूवी की स्टार्टिंग में ही वी वर ट्राइंग टू गेस कि एक्चुअली मूवी है किस चीज पे. हाँ. बिकॉज हम लोगों ने अब इतनी हॉरर मूवीज देख ली हैं. हाँ. तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में अगर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये मूवी तो हमने समझ ली है. हाँ. राइट. तो वही मेरे साथ हुआ एक्चुअली. ठीक है. मैंने तुम आई रिमेम्बर तुम मुझसे पीछे पूछे थे ये करने वाली है क्या अभी आके मार देगी लोगों को. नहीं, मैंने इनफैक्ट ये तक बोल दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मदर है, शी हैज मेड a deal with the devil and now the devil has come to do something, right? तो मैंने मतलब बिल्कुल ही अपनी तरफ से एक verdict दे दी थी कि यार this is what the movie is gonna be and I was so wrong. But nobody can, Anurag, people should learn from Anurag's mistake. Nobody can judge what will happen at the end. This movie is very different. It starts somewhere else, as I said, and somewhere else. हमें नहीं पता चलेगा क्या होने वाला है. And we want all of you all to watch it. Definitely. That's why I'm saying. So I'm actually glad कि I was wrong. Yeah. Right? अगर मैं सही होता ना तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग होता कि मैंने 1.5 घंटे की मूवी भी देख ली और मुझे पता था कि क्या हुआ है स्टार्टिंग में वही हुआ. तो आई एम सो ग्लैड that did not happen. But have you realized this one thing, Anurag, कि है ये horror movie, but the ending is very sweet. It's very heart touching. Yeah, it is. Yeah. But then it took us 10 minutes to realize कि oh shit. ऐसा हुआ है. Correct. मतलब we didn't realize it क्योंकि हमें दिख कुछ और रहा था और हो कुछ और रहा था. We took a sweet time to realize. Yeah. But मुझे एक दूसरी साइड भी है. Even though we enjoyed the movie, we loved the movie. I think ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाऊं क्योंकि ऑफ कोर्स कपल ऑफ क्रिटिक्स हैं हम लोग तो हमें थोड़ा तो क्रिटिकल होना पड़ेगा. आई फील कि मूवी ना एक स्लो पेस में चली थी एंड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द मूवी मे बी आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट. Maybe I was thinking ke okay now you know the shit is gonna hit the fan. It's like that you know कि कुछ तो मतलब भयंकर होने वाला है इस मूवी में. पर अनुराग, we have to remember this is not a conventional horror movie. This is a very psychological. It's a PG-13 movie. तो obviously इसमें ऐसा खून खराबा नहीं होगा. And it is very psychological and psychological movies में usually बहुत subtle तरीके से बहुत crossed चीजें दिखती हैं. तो that is difficult for your brain to analyze. But at the same time, of course as you said कि थोड़ी slow movie थी. It has to be slow क्योंकि क्या दिखाएंगे यार, खून खराबा नहीं दिखा सकते क्योंकि उस टाइप की मूवी ही नहीं थी. हाँ, मतलब उसमें इस मूवी में खून खराबे का मतलब it would have not, I would put it this way, it would have not made any sense अगर इस मूवी में खून खराबा जबरदस्ती का दिखाते तो. राइट. तो इस तरीके की मूवी थी बट आई एंजॉयड इट. राधिका एंजॉयड इट. एक्टर्स आई वुड से स्टिल थोड़ी एक्टिंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी. आई थिंक द मदर was supposed to hold the fort. I think the way the movie was written, I think the mother character she could have acted better. I don't know. I differ from you. I feel ऐसी कई movies होती हैं जहाँ पे it's not about the actor, it's not about the actresses, it's about the storyline. And I felt that this movie had that. It was about the story. It was about the premise. It was about where this is leading to and what is that deep meaning that this movie hides. And मतलब and honestly I feel कि इसकी audience कम है. सबको नहीं पसंद आएगी ये मूवी. But जिसे पसंद आएगी, I mean this has its own audience. I hope so. I hope I तो know I'm a part of it. Are you part of that audience, Anurag? I'm not sure. To be because honest, I remember you have told me that I want to keep my brains off while I watch movies. नहीं, honestly अगर मैं बात करूं तो I enjoyed the movie, especially the ending and the way they took the audience towards the ending. बीच में थोड़ा सा एक कुछ weird चीजें हो रही थी which was like I was thinking कि क्या चल रहा है. At one point in time I also thought maybe she is just thinking all of this, like nothing is real. ऐसा मुझे लगने लगा था बीच में. But obviously मतलब that was not the only thing that was happening. But yeah, I would say I liked it. Will I watch it again? I don't know, but I enjoyed what I watched. So how would you rate it? Interesting. I think I should rate it 8. But it's not for everyone, and the couples out there, corporate couples, for them I would say
देख लो इस मूवी को, देखना तो बनता है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट लाइक एन ऑस्कर जंप विनिंग स्केयर्स नहीं है, Jump वो scares नहीं है। एक्सपेक्ट हाँ, मत करना. हाँ, तो वो नहीं है, तो बट डेफिनेटली अ मूवी टू वॉच फॉर द स्टोरी लाइन. 100%. पर देखेंगे कहाँ, ये तो बताओ, देखेंगे कहाँ लोग, बताओ. ये फर्स्ट एपिसोड में Stop it. फर्स्ट एपिसोड में शी फॉरगॉट द नेम ऑफ द पॉडकास्ट इटसेल्फ, राइट? एंड अभी हम थर्ड एपिसोड में ही पहुंचे हैं, एंड शी हैज फॉरगॉटन वेयर वी वॉच्ड इट, बट इट्स नॉट हर फॉल्ट, बिकॉज जब This जब is वो बैठी Anurag थी who sets up the entire scene and then calls me. तो मैंने एक्चुअली ऑलरेडी मूवी सेट कर दी थी, एंड शी जस्ट केम, शी सैट डाउन एंड वी स्टार्टेड वाचिंग. इट्स ऑन जियो हॉटस्टार बाय द वे, Okay. एंड इफ यू, एंड इट्स रिसेंटली देयर. Acha. So, हाँ, I remember we yeah. were thinking of watching it but couldn't find it. Yes. Yeah. So it has recently come on Jio Hotstar. Do watch it. I am giving it a 7. What about you? But if I have to give the rating, I'll be a little bit selfish here, but also tell you all, I really liked it. I would give it a 9.5. Oof, my God. But I know कि इसकी audience would be niche, but I would urge you all to watch it. It's a very nice watch. You have to put in your brain to watch this movie, and you have to understand what's happening. But will you call it a slow burn? Yeah, we can call it that. Okay, then if you guys are into slow burn movies and psychological horror, psychological thriller, and something that twists your mind, Watch it. Do watch it. We would definitely give it a popcorn rating of. She has given 9.5. I've given 7. तो 8 मान लेते हैं यार बीच का overall. Yeah, है ना? 8.25. अच्छा भाई साहब. ठीक है भाई. तो now we are going 2 decimal points. Okay, so 8.25 रही हमारी rating. Please go on cocofficial.in@gmail.com to share your thoughts with us. Tell us what movie or show you want to watch next so that we can cover it up. And by the way, we thought जब हमने ये बोला था अपने पिछले एपिसोड में, a lot of people actually reached out to us and they sent us emails. In fact, people reached out to us on LinkedIn when we started promoting our podcast, on Instagram as well. So I believe that it deserves a shout out. So I was thinking कि if you guys are reaching out to us through cocofficial.in or through any of the social media handles, I believe कि हमें एक shout out देना चाहिए लोगों को, right? Every week. क्या बोलते हो? Yeah, we should. तो किसको दे रहे हैं फिर इस हफ्ते? See, I'm very bad with names. Please don't take me on that. But you tell me. So I think we should go with the person who pinged us on LinkedIn, I believe. So Anirudh, if you are hearing this, thank you so much. We give you a good shout out here on a couple of critics. Thank you so much for sending us your request for covering The Minimalist. So we'll try to cover it next. Absolutely. And thank you so much, guys, for listening. If you're not listening, do listen, do share. We try to come up with all the interesting movies that we can so that we can recommend you and you can then decide either to watch or not watch. Exactly. So this was Couple of Critics signing off. See you guys in the next episode. Bye.